Okay, I think we are live, so we can start. Okay, as we discussed last time, from today, today we will learn the complete perfect tenses. Everybody remembers? Yes. So earlier we had learned present tense is Spieler cricket and free is Spieler cricket for I am playing cricket. Then we learned future tense is werde cricket spielen, and then we learned past tense is spielte cricket. And then we said Germans when they are talking, especially to use past tense also, they use present perfect tense. Everybody remembers this? Yeah. And then we started with a simple example we had started with. It is I have played cricket, if you remember. So similarly, the way in English you had have as auxiliary verb, jo aap chalate the, and played was its past participle form. In Deutsch also, German also, ich habe cricket. Only thing is the past participle form gespielt will go at the end. You remember, everybody? Yeah. Everybody remembers this? I have played cricket. Ich habe Cricket gespielt. He has played cricket. Er hat Cricket gespielt. So we had seen three rules. First rule, like English, there will be an auxiliary verb and we will conjugate it. Like English, there will be a past participle in German also, but only like modal verbs. After you put a verb here, the gespielt or whatever is the past participle form will come at the end. Everybody remembers this? Yes. Narendra, can you mute yourself? I think you only. Okay. So now we will just expand these rules first. So first of all, as you remember, we had learned, we had talked about this in detail. In English also, it's go, went, gone. There is no logic why go happens went, why happens gone. Right? Everybody remembers? Yes. Similarly, in German also, you have to just remember these few verbs, like the second and third forms, go, went, gone. In German also, you have to remember gehen, ging, gegangen. So the first rule, important rule that will stay same is that the participle zwei will come at the end. Second rule, how that gespielt will be formed, you have to just remember the way we learned in past tense also. There is a rule for very few verbs, ge plus stam plus t, but there is no use of that rule because nobody follows it. So we will just remember them. So what we will do is that we will remember few of the important, today we will learn few important past participles of a few verbs. Okay. Yeah. So first of all, very important is essen becomes, you can write with me. I am going to give you anyway. I have provided you the PDF, right? Yeah, but we'll write also. Yes, but it's good because it will help us right now. Essen becomes gegesen. Okay. Lesen becomes gelesen. I'm just taking any random five. Okay. Every time I take some different five. Kommen becomes gekommen. Gekommen. Gehen becomes gegangen. Gegangen. Okay, I think for now, okay, sehen, gesehen we can take, sehen, gesehen, because we use these verbs. Okay, so, and again, there are few regular verbs, so to speak. So, spielen, so that becomes, we had seen, spielen becomes gespielt, gekochen becomes gekocht, etc. Have you written this? Yes. Okay, just use them because we want to make our sentences. This is one thing. Second, and this is a very important thing, just be with me for next 2 minutes. Okay, so if you see, I have played cricket, I have eaten pizza.
In both cases, have is auxiliary verb. Everybody understands? Yes. And then we conjugate have. We conjugate have to has, depending on I have played cricket, he has played cricket, we have played cricket, right? Now, in English, whatever happens, that auxiliary verb was always have, right? Kuch bhi ho jaye. I have played cricket, I have drunk tea, I have eaten pizza. It's always have. Agreed? Yes. Okay. But in German, most of the cases, I would be tempted to say 95% of the times, it is still have. That is haben. Everybody knows haben, right? Yes. Haben. But only in few cases. Just write them with me so that it will be easy for you. Only in cases where your verb is changing position. For example, gehen. When you go, you change your position, right? You go from one place to other. Kommen, you come from one place to other. Fahren, you travel from one place to other. Fliegen, you fly from one place to other. Understood? What about laufen? We will come to similar cases afterwards, okay? Because then people will get confused right now, okay? I will give a list of such verbs, okay? Their basic thing, when you are changing your position, then rather than haben, you will use auxiliary verb of sein. Let me tell this. Everybody understood? So, okay, a little bit of complication. In English, every time it was have. Everybody understood? Yes. Yes. In German also, most of the cases it will be haben only. Only the actual rule. I don't want to complicate it, so I'm making it simpler. When your position or your state changes, then you will use the sein. Okay, we are going to, after cases, we are going to revisit this topic again, and that time I will give you the complex verbs. Like, for example, when you sleep, when you go to sleep, you are changing your position from awake to asleep. When you wake up, you are changing your position from asleep to awake. When you are dead, you are changing from living to dead. Seriously, that's how it works. When somebody is born, then earlier it was not alive, now it is alive. So that's why I don't go that complex right now. We don't know. For now, we will focus on the change of position part. So for today, we will see only 4 verbs. Which ones? Gehen, kommen, fahren, fliegen. Everybody understood? When you are going to use these verbs or past participle forms of these verbs, we are going to use sein as auxiliary verb. So write down, this is a very important example. Write down with me. Again, it will come with experience. It is something that I have seen many people with B1 also making mistake, that ich habe gekommen. समझ रहे हो? I have gone to Berlin will be so when you go, does your position change? Yes. So what it will be? Sein ka roop. Sein ka Sein. ish roop क्या होता है? Ich bin. bin. Is habe. Ich bin. नहीं, अभी sein लगेगा, right? Okay, yeah. अभी के लिए हम to ही रखेंगे, क्योंकि केसेस में हम to को क्या बोलना है सीखने वाले हैं. To Berlin gegangen. Very many people get confused here. अरे but हमने तो सीखा था haben है. Only for few verbs. And मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, for now we will learn it only for 4 verbs. वो जो जन्म लिया, मर गया, जागा, सोया, वो बाद में देखेंगे. समझ रहे हो ना? Let's not complicate. वैसे भी कितनी बार बोलने वाले हो कि कोई जिंदा हुआ, कोई मरा. It's right. और एक बार मरे तो फिर तो नहीं बोलेंगे ना वापस जिंदा हुआ. दूसरा मरेगा इसके बारे में बहुत बोलते हैं ना लोग. So don't worry. So what I'm trying to say is, yes, but it's an exception. So let's not go there. Okay. When we are learning, first we will learn
ये एग्जाम्पल लिख लो. Everybody understood this thing? Yes. Yeah. Why ich bin gegangen? Because you will see a lot of Germans using this. And that's why you should not get confused. Because if you literally translate, I have gone to Berlin, ich habe gegangen. Yes. और बहुत सारे लोगों का जिन्होंने those who have not learned it systematically, they make that mistake. Again, आसमान नहीं टूट पड़ेगा, especially when you are talking. But in exam, yes, it's a problem, right? Yeah. Yeah. Okay, सामने वाला anyway, if it's a German, he will perfectly understand. Okay, he doesn't know the rule, but he knows that कि भाई आप Berlin चले गए. That's important, right? But okay, so now the 3 rules again I will refine. First rule, there will be an auxiliary verb haben or sein. Most cases haben, in very particular cases sein. Sein. Second rule, जो gespielt है, जो पास्ट पार्टिसिपल है वो तो हमको रट्टा मार के याद रखना पड़ेगा जैसे हमने इंग्लिश में किया. नो प्रॉब्लम. एंड थर्ड रूल, दैट थिंग विल कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. क्लियर है? ओके, 5 सेंटेंस बनाएंगे. आपने ये लिख के लिया है? Yes. मैं 5 ये शुड आई रिमूव दिस? 3 रूल वापस रिपीट करोगे प्लीज एक बार? 3 रूल. फर्स्ट रूल हमने लास्ट टाइम भी हमने इंट्रोडक्शन में सीखे थे. वी हैव जस्ट रिफाइंड देम. फर्स्ट रूल, फॉर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, you will use auxiliary verb as haben or sein, and then you will conjugate it. Ich habe, du hast, hat, वगैरह वगैरह. अगर जगह चेंज हुई तो ich bin, du bist. सेकेंड रूल, पार्टिसिप स्वाय बनेगा, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा. थर्ड रूल, मोडाल वर्ब की तरह ही एक बार सेकेंड पोजीशन पे चलने वाला वर्ब आ गया है तो जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एंड में चलेगा. क्लियर? Yeah. Okay, so let's make 5 sentences. I hope you all are written this down. Yes. So that I can make 5 sentences. मैंने eaten दिया है, right? Yeah. पांच सेंटेंस बनाओ, तब तक मैं YouTube पे देखता हूँ. Santosh, hi. Vineet, next month you have to come to Germany. So we are learning, Vineet. Whatever we have learned till now, you can learn by seeing the sessions we have available. Yeah. Okay. When you are done, just write your names in chat window. Vineet, you are already in class. अभी के लिए 2 या 2 को 2 ही रखो. डोंट गेट कंफ्यूज्ड.
जब हो जाए तो chat window में अपना नाम लिखना. Those on YouTube, just write your names on YouTube so that we can move ahead. Okay. Okay, I see 6, 7, 8, 9, 10. I also see more participants in Zoom call. So I hope everybody is back from vacations, right? Yes. Yeah. So, but as I said, in Germany, there are more vacations than actual working days. Just my daughter went for school today, first time after so many days. And I just realized that after 5 months, they have again a vacation of, 5 weeks, they have vacation of 6 weeks. So it is a place to study, I would say, especially if you are a kid. Yeah. Okay. So who is there anybody who has not given answers, want to give answers? Akhila? Kila, I am 100% sure you have talked earlier, but I think we are now at a position where we have to make second rounds. Okay. So anyone else, if there is nobody who has never spoken, we will give Akhila a chance. Etal? Ethel, I also heard you. So maybe next round you can say. Okay. So trust me, I have taught 1,200 people directly. My memory is very fast. Yeah. So okay. Pushpa, but I'm little bit afraid. I'm not sure I'll be correct or not, but I can try. Don't worry. Have you attended all classes? Yes. Then don't worry. देखो, अगर आपने, if you have done all classes and then you have not understood, it's my problem. It's not your problem. The only problem is आप बोलोगे यार मैं तो last 4 class नहीं किया, अभी नहीं आता. Then there is nothing I can do. Okay, Pushpa, you give the answers. So I have eaten pizza. Ich habe Pizza gespielt. आए पिज्जा खेलोगे क्यों? गेगेसन. पिज्जा के साथ क्यों खेलोगे? वो अलग है. Sorry. Gegesen, right? Again, as I said, important is logic. Grammar is secondary, right? Ich habe Pizza gegessen. Very good. Next. So next is you have read Harry Potter. Sie habe Harry Potter. Sie habe Harry Potter. I forgot the read. I Gelesen. Pushpa, right? Is this Pushpa? Yes. पुष्पा पढ़ाई कम हो रही है. जी के बाद क्या होता है हाबन का फॉर्म? Haben. देखो पुष्पा, ये क्या हो रहा है? हम 5वीं स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं और आप बोल रहे हो कि आपको 2+2 नहीं आ रहा है. समझ रहे हो ना? गेलेजन बाद की बात है. जी का हाबन का फॉर्म क्या है? हाबन. तो जी हाबन हैरी पॉटर गेलेजन या फिर du hast हैरी पॉटर गेलेजन, बोथ आर ओके. Gelesen or Gelest? गेलेजन मैंने दिया ना. एवरीबॉडी रोट डाउन. मैंने दिया था, राइट? Yes. जो 5 दिए मैंने वही पूछे हैं. हाँ. Okay, next. So he has gone to Munich. Hast to Munich gegangen. बाकी सब ठीक है. Air ईस्ट बाद में करेंगे. पहले तो एयर हास्ट होना बहुत डेंजरस है. एयर हार्ट. पुष्पा, सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी. हास्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है. पूरे डॉइच में नहीं है हास्ट की. I think someone should take it from here. नहीं देखो, I am okay. See, understand Pushpa. I am okay if your air ist becomes wrong. I am completely okay. You have to understand. I feel a little bit worried अगर आपका air heart नहीं हो रहा है. Everybody understand what I'm trying to say? Yeah. I am okay if you make air heart. फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अरे heart नहीं, ist होना चाहिए क्योंकि gone आप चले. पर अगर आप air hast बोलोगे तो it will be a problem, right? So correct answer is er ist to Munich gegangen. Okay, maybe Akila, you can take next two. Yeah, we have seen Inception. Wir haben Inception gesehen. Very good. I have come to Berlin. Ich bin to Berlin gekommen. Perfect. Those two are correct for me. It happens. Okay, quickly कितने correct है? हर कोई लिखो YouTube पे और Zoom पे भी. I have one question. Yes.
The first one was I have eaten pizza, so it should be ich bin Pizza gegessen or ich habe. देखो पिज्जा खाते हो तो तुम्हारी पोजीशन चेंज होती है, पेट भरता है ठीक है, पर आप एक दूसरे जगह जाते हो नहीं नहीं. तो क्या आएगा? Hub. Hub. That's why, Hub. see, that's why I have tried to make that rule simpler. I know the actual definition of the rule when there is a change in position or state, पर फिर लोग उस rule से डरते हैं, समझ रहे हो everybody? Yeah. So that's why let's टुकड़े टुकड़े में सीखते हैं. अभी के लिए गेहन कॉमन फारन फ्लीगन, थोड़े दिनों बाद वो भी करेंगे, समझ रहे हो? बट एसएन में कुछ भी हो जाए, अभी आप बोलोगे बुफे कर रहे हो, चलते चलते खा रहे हो, उसको कोई पॉइंट नहीं, राइट? मतलब that concept is not for that. Understood? Kedar, one more doubt. हाँ. You said that for eating we are not moving, so it is habe. But while sleeping also, it's like we are sitting, and sometimes we sit and sleep, na? That's what I'm trying to say. That's why don't go there right now. The rule is change in position or change in state. Change in state. आपका जागते हुए स्टेट से आप सोते हुए स्टेट में जाना है. But as I said, this is very very corner case. वो आज करने की जरूरत नहीं. You understood? Okay. For Yeah. today, for me, today gehen common fahren fliegen is okay. Understood? Yeah. Let's not too complicate it. Yeah. And again, as I said, for me it's important कि पहले आप gegangen करो. गलती से इस हब gegangen भी शुरुआत में कर दोगे. I'm really okay with that. Okay. Okay. Everybody understood the concept? Yes. Yes. Yeah. Now, Yes. now, if you remember in our this thing, I have already given you the all the what you can say. Hey, just a second. Verb forms. Verb forms for all the important verbs, irregular verbs. I have already given you, right? Last class maybe we had given people time to take screenshot, and I also sent on WhatsApp also, right? Yeah. So let's quickly have a look again. आज के आज वो आने की जरूरत नहीं है. There is no need that you should put, but tomorrow हेल्फन का हल्फ होना चाहिए. Don't worry. It's just that good to know. और these are the ones that जैसे जैसे आप use करते जाओगे, I would tell everybody every day make 5 sentences. You remember I have given this to you, right? Yeah. So basically, helpen half. Okay, let me give you the bigger table also quickly. It becomes crazy, the database after a few days. Okay, so this is the table. This is as I said. So here you are. If you remember, below you see Essen, right? Yes. Essen, gegessen. Now, if you see, they are completely different. There is no point in people try to make that. Okay, पहले ge आएगा, फिर en आएगा, फिर t आएगा, फिर ये आएगा. It's not worth it. Trust me on this. समझ रहे हो ना? It's not worth it. Just remember them. हर रोज एक दो remember करो. It's okay. That's what you did in English, right? Yeah. You कम क्यों है, इसका कोई आंसर नहीं है किसी के पास. समझ रहे हो ना? Similarly, comment काम के comment क्यों है, ये पूछना ही क्यों? समझ रहे हो? Understood everybody? Yeah. Okay, somebody has raised hand. Please ask. Sir, no, sir, it was by mistake. Okay, then no problem. Okay, again, one more thing I wanted to tell you that some of you had asked that if we want to increase our vocabulary, what we should do, right? So I have told you about dig.cc. Everybody remembers? Yeah. So if you go, I have just opened. Can you see now? No. Yeah. Yes. Yeah. So in the dictionary, if you go and put your verb, it will say gehen. Then it will give you those 3 forms: gehen, ging, gegangen. Yeah. Okay. If I put comment here, that's why I like this dictionary. Again, मेरा इनसे कुछ collaboration नहीं है, कुछ नहीं मिलता मुझे इससे. It just comment काम के comment जो भी आपके दिमाग में है कि भाई अभी lesen में I'm not sure. You can go there. Lesen, last gelesen. Understood? Yes.
You can Yes, get sir. about all verbs. As many. I really love this dig.cc because it gives you all the possible combinations, like all the possible meanings that it can have. Like I'm not against Google. I'm not against Google, but understand Google will give you most closest search. So I will give you an example. In Marathi, I don't know if I have given this example earlier or not. In Marathi, var can be up because 90% of the times Marathi var is used for up. किसी चीज के ऊपर, up or above. But in Marathi, it also means var means ashirwad also, and var means dulha also. But if you quickly put var in Google, it will tell you in English up. समझ रहे हो ना? Yeah. So मतलब वर म्हणजे लग्नामध्ये वर आला. You will not make it कि भाई in the marriage up came, right? You will understand the context. It's not also like now Google has also updated itself and it can give you the examples. पर हमारा जल्दबाजी में क्या हो जाता है कि हम पहला ही मीनिंग लेके it can be problematic. That's why I would say at least don't translate complete sentences in Google. 1 or 2 words directly is okay. But I would strongly remember, use any dictionary you want. I use dig.cc. It will help you. Everybody clear? No, it's not accurate. Google is not accurate actually. No, it's sometimes accurate. It's just that in any language, one word can have many meanings. Many words can have one meaning, right? Yeah. Google is not optimized for that. It will give you the highest use. Again, I don't know the algorithm. It also depends on which area you are, right? How it was searched, how Google gives the first result. I am not sure. You understood? So I will not blame Google that it is not accurate. It's just not always context specific. Am I clear now? Yeah. Okay. So as I said, मैंने जितने PDF में verbs दिए हैं उनके बाहर का चाहिए तो भी कैसे देखना है मैंने आपको बता दिया. Understood everybody? Yes. Any doubt in present perfect? Simple. 3 rule अपने क्या है? First rule haben या sein का form लगेगा. Second rule gespielt, gegessen, gelesen याद रखना पड़ेगा. And third rule वो gespielt, gelesen end में आएगा. Anybody any doubt? No. No, sir. then we have done the hard work. Now we will get 3 tenses free. Okay. Next 10 minutes, we will get 3 tenses. Okay. Ready? Yeah. This is my favorite part. Okay. So let's go there. So we learned present perfect, right? We learned present perfect. I have eaten pizza. So in German, what we did? Ich habe Pizza gegessen. Everybody agrees? Yeah. Now, in English, when you do past perfect, what you do? You keep everything same. You just make have to had. Had. I had eaten pizza. German में भी आपको आता है. Had को क्या बोलते हैं? Hatten. Hatten का ish form क्या है? Ich hatte Pizza gegessen. खत्म. He had eaten pizza. Hatte Pizza gegessen. We had eaten pizza. Wir hatten Pizza gegessen. जैसे इंग्लिश में आपने have का had किया था वैसे यहाँ पे have का hatten करोगे. क्लियर है? Yes. Only thing that again people make mistake. I had gone to Munich क्या होगा? अभी past tense में ही सही. म्यूनिक में को गए तो आपकी जगह चेंज हुई ना? Yeah. तो किसका रूप आएगा? Sein का. बहुत अच्छी. Sein का past tense क्या है? waren. वारन का ich war to Munich gegangen. अगर ये आपको करेक्ट आता है ना, हो गए आपके टेंसेस. ये लिख लो सेंटेंस. एवरीबॉडी अंडरस्टूड वार क्यों आया? Yes. क्योंकि had का यहाँ पे काउंटर पार्ट sein होगा. sein का पास्ट टेंस वारन. वारन का ich रूप war. Ich war to Munich gegangen. Clear? Yes. Everybody understood this concept? Yes. Free मिला, right? Past perfect literally free. Yeah. And now again अपना एकदम free वाला, there is no continuous. तो I have been eating pizza जो इंग्लिश में होता है. Yes. I have been eating pizza का क्या होगा?
I have eaten pizza. इसीलिए फिर से Ich habe Pizza gegessen. Ich habe. Again, I had been eating pizza. Past tense में अगर आप इसको करोगे, Ich hatte Pizza gegessen. ये दिखने को इजी लगता है, पर ट्रस्ट मी 19% ऑफ अस कुछ तो अलग करने जाएंगे. आई हैव बीन, इश बीन वगैरह करने जाएंगे. इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिमेंबर दैट देयर इज नो कंटिन्यूअस टेंस इन जर्मन. ये भी लिख लो, लास्ट के तीनों सेंटेंसेस लिख लो. दैट्स इट, यू आर डन विथ 3 more tenses. Clear? Yes. Okay, so everybody has written it down. Yeah. Let me check YouTube for quickly then. Okay, so as I said, everybody clear? देखो, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल था वही रहा पास्ट परफेक्ट में. सिर्फ इंग्लिश में आप हैव का पास्ट टेंस करते थे, जर्मन में आप हट्टन या वार जाइन का हाबन या जाइन का पास्ट टेंस करोगे. क्लियर? कंटिन्यूअस टेंस तो है ही नहीं. आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट होगा आई हैव प्लेड क्रिकेट. आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट होगा आई हैड प्लेड क्रिकेट. क्लियर? Yes. Now let's do something very interesting. This is my favorite thing. Everybody is attentive. थोड़ा मतलब जगह हो. बहुत ज्यादा जगह है. ओके, तो पिज्जा खाएंगे. ओके, सब लोग मिलके पिज्जा खाएंगे. मेरे साथ एक एक सेंटेंस करते जाओ और हम गिनते जाएंगे. पहले एकदम सिंपल से चालू करेंगे हम. कितनी चीजें हमको बोलनी आती है, आई विल टेल यू. पहले एकदम सिंपल. एवरीबडी गिव आंसर टू मी डायरेक्टली. आई ईट पिज्जा. Pizza essen. Ich esse pizza. Clear? Is essa pizza. Very Yeah. good. I am eating pizza. Is essa pizza. Very good. I am very happy. कोई ish bin pizza ऐसा हमको नहीं है. Very good. Next 2 हो गए. I can eat pizza. Very good. I must eat pizza. What? I must eat pizza. Very good. I want to eat pizza. Ich Ich will pizza essen. I would like to eat pizza. Ich möchte Pizza essen. Pizza essen. I may eat pizza. Ich darf Pizza essen. कौन दूर कर रहा है? Ich darf pizza Ich essen. darf Pizza Ich essen. darf pizza essen. Good. Very nice. Now I will eat pizza. Ich werde Pizza essen. Werde pizza essen. Very good. I will be eating pizza. Ich werde Pizza essen. Very good. फिर से ich werde pizza essen. Then हमने लास्ट टाइम सीखा eat का नॉर्मल पास्ट टेंस है ask. Even though we never use it, पर अभी के लिए I ate pizza. Is asked Pizza. Ich asked pizza. Very good. I was eating pizza. कौन वार को गया? I was eating pizza. No continuous tense. फिर से I ate pizza. asked pizza. Very good. And then what we learned this time? I have eaten pizza. Very good. I had eaten pizza. और similarly, I have been eating pizza और I had been eating pizza को very good. So basically अपने को आता है normal present और simple present, continuous present, present perfect, future, continuous future, simple past, continuous past or past perfect. Understood everybody? Yeah. Yes. The only thing we have not learned is future perfect. I will have been gone. जरूरत नहीं है, ऐसे कभी बात नहीं करते आप, स्पेशली A1 A2 पे तो जरूरत नहीं. Apart from that, there are 9 possible tenses. उसमें से 8 आपको आते हैं. Everybody understood? Yes. Yes. Over and above आपको आता है questions और request बनाना. Okay? Yeah.
Yeah. तो अभी आपको क्या करना है, वो 250 वर्ड कर रहे हो ना वोकेबलरी? No. नहीं Sorry. कर रहे हो? कर रहे हैं धीरे धीरे कर रहे हैं। 250 देखो, वो वर्ड्स नहीं करोगे ना तो ये सब का कोई यूज नहीं। हमने इस पे बात की है, राइट? Yes. Yes, Yeah. yes. देखो, लैंग्वेज में अगर ग्रामर नहीं आया तो भी चलेगा, पर वर्ड नहीं आते तो कोई फायदा नहीं। समझ रहे हो ना? मैंने आई थिंक हाँ। एग्जांपल भी दिया था। अगर दोस्त वर्ड पता नहीं तो कोई फायदा नहीं, दोस्त को नहीं पता तो चलेगा। मैं दोस्त Yes. मिलना, मैं दोस्त को मिलना भी नहीं चलेगा, पर मैं को मिलना हैज नो मीनिंग। समझ रहे हो? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? प्लीज वर्क। मैंने आज भी आपको राउंड अबाउट, आई थिंक टोटल देयर विल बी राउंड अबाउट 100 वर्ड्स. So I have given you enough vocabulary also. People ping me directly, sir give me like vocabulary. जो है उतना तो करो पहले। समझ रहे हो ना? जिस दिन आप लोग बोलोगे ओके मेरा ये 500 हो गया, मैं और वोकेबलरी देता हूँ, बट फर्स्ट देखो देयर इज अ लेवल, we go step by step, right? मतलब like we will do this 25%, this 25%. There is no point in चलो एक दिन वोकेबलरी 100% सीख लिया, ग्रामर कुछ भी नहीं आता, it's also useless. Grammar 100% सीख लिया, वोकेबलरी कुछ नहीं, it's also useless, right? We have to keep that balance. Understood? Yeah. Yes. Okay, so please make sure that you make sure that you learn those 250 words. Then I have given now this gehen, ging, gegangen, komen, kam, gekommen, etc. You also work on that. Anybody any doubts in all the tenses we have learned till now? Koi bhi doubt, I am okay, as long as it is part of whatever we have learned. Anything? किधर वो I ate पिज्जा वाला कौन सा था? वो एक बार जस्ट रिपीट। I ate pizza. आप थे क्या past tense वाले क्लास में? मैं था। तो उसमें हमने सीखा था I ate pizza कि भाई, तो एसन आस गेगेसन, हमने वो उसका टेबल क्या है, एसन आस गेगेसन, Simple past. तो सिंपल पास्ट में क्या होगा, इश आस पिज्जा. अगेन एज आई सेड, जर्मन बोलते हुए कभी इश आस पिज्जा नहीं बोलेंगे, दे विल यूज इश हाबर पिज्जा गेगेसन. वी हैव मेड दिस क्लियर, राइट? Yes. Yes. Okay, anyone else? Kedar, it's not in tenses actually. Can I ask you a question? Yes, yes. As long as it is, we have learnt it. My only star terms and condition applies as long as we have learnt it. Yeah, got it. It's about time and all. But I've seen a sentence like the train is coming at 2:30. So what do we write for 2:30? देखो आपने आगे का पूछ दिया ना, मैं वही बोल रहा हूँ. इनफॉर्मली टाइम कैसे बोलना है वो सीखेंगे, उसके लिए डेडिकेटेड टाइम का अपना ये भी होगा, डोंट वरी. 2:15 कैसे बोले, 2:45 कैसे बोले, वो ट्रस्ट में आपको वो हिंदी का, आपकी मदर टंग छोड़ के बाकी किसी लैंग्वेज का आपको नहीं आता, डोंट वरी. समझ रहे हो? Yes, thank you. 3 को 5 कम, ऑलमोस्ट 3, ये सब बोलना भी हम सीखेंगे, डोंट वरी. बट एज आई सेड, ये इसेंशियल नहीं है. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, इट्स ऑलवेज ओके टू से 2:55, राइट? 3 को 5 कम इज नॉट इसेंशियल. अंडरस्टूड? Anyone else? More in your question, in your question, more important is the train is coming. So the train is coming का the train comes होगा, right? Yes. Right. Zukommt. Kedar, hello. Yes. Narendra here. Kedar, actually my question is out of syllabus. Then don't ask it. मैं आपको बोलूंगा कि फिर ये है out of syllabus. Let's not go out of syllabus. Okay. As long as it is inside syllabus, there are a couple of questions I am. It might look silly कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, but always remember we are like 700 people who don't know each other. If I answer one question which is out of syllabus, I cannot say no to others. You understand everybody, right? Yeah. Yeah. Sorry, Kedar. No need to be sorry. I am just telling. Trust me, I have done till C2. There is not a question that I cannot answer. It's just that I cannot be seen as partial. That's the only thing. Yeah. Okay. If there is anything that is we have done, you are not understood, I am always there to ask. Please, we still have a couple of minutes because I at the end I want to talk 10 minutes about cases. Anybody? Any doubts? No. Everything is clear? Yeah.
Yeah. ओके, सो विद दिस, अगर आपने ये मेरे साथ ठीक से किया है, अगर आपने अभी तक के एपिसोड ठीक से किया है, खुद से पढ़ाई की है, तो यू आर डन विथ ऑलमोस्ट 50% ऑफ A1. इन नेक्स्ट 6 to 8 क्लासेस होपफुली, क्योंकि अपने क्लासेस एक एक घंटा चलते हैं, तो इट विल बी डन इन 6 classes. Generally earlier classes it used to take 8 classes. We will learn cases. That is perhaps the most feared concept in German, but it is not that hard. And I teach, मतलब वो मेरा USP है, I can say कि I teach it the best because I teach it with analogy of Marathi, Hindi, English, whatever we have. So from next class we will start on that. Please make sure I had timed this. Trust me, I had timed this so that we get 1 month window की जब आप लोग छुट्टी पे नहीं जाओगे, समझ रहे हो ना? So please make sure कि next जो 6 classes है वो please miss मत करना. आपके जो friends है, बहुत सारे लोगों ने, I will try to put that message again tomorrow on all various groups and all. मैं अपने ग्रुप्स पे भी भेजूंगा, वो आपके सारे उन फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना कि जिनको लगता है कि उनका बेसिक A1 वगैरह हो गया है पर उनके केसेस क्लियर नहीं है. This is the best part. अगर उनको ज्वाइन करना है, we will create another WhatsApp group so that they are like they are only there for say advanced class, right? Because we have been doing this since long. But next 6 classes are really important. At the same time, what will happen? We are going to focus only on the cases. Make sure that कि अभी तक का जो सब पढ़ा है वो भूल न जाए. Understood? Yes. Yeah. Make sure that every day you are making at least 5 sentences. देखो, जिसने उस दिन I am playing cricket किया है, वो आज spiele cricket quickly करेगा. उस दिन अगर नहीं किया होगा तो अरे I am playing क्या हो गया होगा, समझ रहे हो ना? I can play cricket, ich kann cricket spielen. अभी immediately आ रहा है क्या? Yeah. That is important, so guys. fast. मैंने बोला है मोडाल वर्ब आत्मा है जर्मन का, केसेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, समझ रहे हो ना? मोडाल वर्ब जिसको आते हैं ना, उसको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि देन द मेन थिंग मोडाल वर्ब गिव्स यू कि सेकंड पोजीशन पे चलने वाला वर्ब और मेन वर्ब इन इट्स इंफिनिटिव पोजीशन, समझ रहे हो? और अगर आपको मोडाल वर्ब आते हैं तो आपको फ्यूचर टेंस आता है, आपको रिक्वेस्ट आते हैं, एंड इट आल्सो हेल्प्स यू इन परफेक्ट टेंस. समझ में आया? एक्चुअली आता है, बट वो दिमाग से जुबान पे आते आते टाइम लग जाता है. उसी के लिए तो प्रैक्टिस होती है ना, मतलब that's what I'm trying to say. See, that's called muscle memory. As I said, cricket is my favorite thing. So I don't know. आप अगर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने जाओ अगर किसी एकेडमी में, तो पहले 15 दिन ना आपको एक बॉल टांगते हैं वो, और उसको सिर्फ टक 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 बैट से मारना होता है. आपको लगेगा कि भाई कितना बोरिंग चल रहा है, क्या बोल रहे, क्या कर रहे हैं ये, बट इट इज बिल्डिंग योर मसल मेमोरी इन द सेंस कि कहाँ बॉल आके कहाँ लगनी चाहिए, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़े. समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? या व्हेन यू ड्राइव इट्स द सेम, द मसल मेमोरी. कभी कभी होता है कि भाई स्पेशली, मतलब आई यूज्ड टू लाइक व्हेन आई यूज्ड टू बी इन पुणे, एवरी डे आई हैड टू गो फ्रॉम पीपले सौदागर टू कराड़ी, एंड वो इतना दिमाग में बैठ गया था. एंड देन समटाइम्स यू स्टार्ट थिंकिंग समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड व्हेन यू रीच कराड़ी. यू डोंट इवन नीड टू लुक एट द रोड, राइट? यस. समटाइम्स जाना आपको कहीं और होता था, थोड़ी देर बाद यार अरे यार मैं यहाँ कहाँ आ गया सोचते because that input has not gone to your brain. That's not a good thing. Drive safe. I'm not saying you should do that, but what I am trying to say is जब वो हो जाएगा, I can play cricket, ich kann cricket spielen, वो का क्योनन के लिए कान के लिए क्योनन, फिर उसका रूप कान, ये जब तक होगा आप फ्लुएंटली नहीं बोल पाओगे. Everybody understood? आपके जैसे में तो वक्त लगेगा. देखो उसके लिए तो मेरे को 8 साल लगे, राइट? ओके, 15 लगेंगे. नहीं 15 नहीं लगेंगे, 4 साल में हो बना सकते हैं, पर ऐसे सोचना पड़ता है. टू बी ऑनेस्ट, आप ऑनेस्टली करोगे तो 1 साल में जितना नॉर्मल चाहिए ना, आई विल से 1 साल में जितना नॉर्मल चाहिए उतना जर्मन हो जाएगा. आफ्टर दैट सी, आई डोंट नो इफ वी टॉक्ड अबाउट दिस और नॉट, हम लोग इंग्लिश में भी B2 नहीं, तो डोंट वरी अबाउट इट. हमको लगता है हमको बहुत इंग्लिश आती है, बट जब आप एक्चुअल इंग्लिश, उनका इंग्लिश पढ़ने लगते तो पता चलता है कि भाई आप देखो कितनी इंग्लिश आती है. सो yes, we are fluent in English, but most of us will not pass the B2 of English. So really don't worry about it. अपने को first thing we need to do, we need to go till B1. And for B1, it's not about कोई गोइथे की एग्जाम दी, टेल्क की एग्जाम दी, where you can express your opinions in German कि भाई बच्चों ने मोबाइल देखनी चाहिए कि नहीं, बच्चों को मोबाइल देना चाहिए कि नहीं. इस पे जो आपको हिंदी में बोला तो आप धार इंग्लिश में 1 घंटा बोल लोगे. आपको जर्मन में 5 मिनट भी बोलने आया ना, आपको जर्मन आ गई. देयर इज नो अदर
yardstick to measure that. Understood? When you can express your opinions in any language, you know the language. It's as simple as that. देखो, improving vocabulary is an ongoing process in any language. Understood? Yeah, that's true. Yeah. It's and again, it's up to you. Somebody with only 2000 vocabulary can express their feelings. Somebody with 5000 vocabulary cannot. समझ रहे हो ना? कि अगर आपको नहीं आता है कि I am good driver, बोलो I drive well. ये तो आपको आता है, right? Yes. You need to find out ways to make it simpler. कि अरे यार क्या चाय पीने की इच्छा हो रही है यार, इतना डेंजर नहीं आता. पर इश में टी ड्रिंकन तो हो ही सकता है, right? Yes. At the end both are same. मतलब चाय पीने का दिल कर रहा है, 10 hertz वगैरह ऐसे नहीं करना. That's what I'm trying to say. You have to be able to simplify things and put in words. समझ रहे हो ना? मतलब मैंने बलास में ये मतलब मराठीत ही अतिशय सुंदर पेंटिंग आहे या अतिशय नेत्रदीपक पेंटिंग आहे. खूप चांगली पेंटिंग है. समझ में आया ना आपको मेरे को क्या बोलना है? Yeah, sure. बहुत अच्छा पेंटिंग है, इज गुड इनफ फॉर बहुत नेत्रदीपक, बहुत नयन रम्य. भाई मैं इसको अच्छा बोल रहा हूँ. अभी मेरी जो कला है इंग्लिश की वो बाद में, जर्मन की बाद में दिखाऊंगा. समझ रहे हो ना? सो बेसिक थिंग इज यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. सो आई थिंक वही हमारी ट्रेन डिरेल हो गई थोड़ी. हम आते हैं फिर से केसेस पे. एज आई सेड, केसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट केसेस इज अ वेरी सिंपल थिंग. लोग अननेसेसरी केसेस से डरते हैं. You have done in your mother tongue, at least in our Marathi, we have done 8 cases. I am sure कि हिंदी में भी आपने किए होंगे. जो मराठी के उसमें केदारचा, केदारची, केदारचे, केदारला, केदार ने. हिंदी में केदार का, केदार से, केदार को, केदार ने. ये we all learned it, right? या कर्ताने क्रम को कर्ण से ऐसे करके था. Very good. Somebody is very good at Hindi. मैं इतना नहीं हूँ. Okay. Those who are with other languages, please, it will be the same thing in your language also. That there is a subject, there is an object, and there is an indirect object. Everybody knows that, right? Yeah. The funny thing is, subject मतलब कर्ता, object मतलब कर्म, indirect object मतलब हिंदी या मराठी में क्या होता है, किसी को पता है? कर्ण मैंने पहली बार सुना. मराठी में तो संप्रदान होता है. संप्रदान. हिंदी में भी संप्रदान होता है. हिंदी में भी संप्रदान होना चाहिए. कर्ण तो कर्ण अर्जुन में से आ गया. तुम कहाँ से लेके आए इधर यार? कर्ता ने कर्म से. Okay. Anyway, the thing is, subject, object, indirect object. That concept we know, right? And then another concept. I don't know. We talked about this or not? That bus आती है, truck आता है. We talked last time, right? Yeah. So as I said, in Hindi, in our languages also, we know that for non-living things, we know that we give different genders to them. We say that bus is a lady and truck is gents. Nobody should ask questions, right? In fact, I will give you a classic case. I don't have the similar case in Hindi, but I will give you a case in Marathi. That in Marathi, when we see somebody vriksha आपको पता है, right? पेड़. वृक्ष मतलब पेड़. पर जब हम वृक्ष बोलते हैं ना, तो उसको मेल बोलते हैं. तो वटवृक्षा है in मराठी. बट उसी को जब पेड़ बोलते हैं या फिर मराठी में उसको झाड़ बोलते हैं, झाड़, तो अब बोलते हैं ते वडाचं झाड. मतलब वही वर्ड इज बनियान ट्री. वही पेड़ है. उसको जब आप झाड़ बोलोगे तो पेड़ लो लेवल, तो उसको न्यूट्रल बोलोगे. पर जब आप उसको आदर से वृक्ष बोलोगे तो आप उसको मेल बोलोगे. समझ रहे हो? सो क्या बराबर है, क्या रॉन्ग है? देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग. सी, लैंग्वेज came first, then came grammar. Always remember that. समझ रहे हो ना? Yeah. So at the end, yes, grammar is important. Please don't misquote me. कहीं जाके मत बोलना कि भाई केदार बोलता है grammar useless है. But grammar is not language. Language is more important. Grammar is to support it. So तो वृक्ष ते झाड़ both are okay. Similarly, in German ने बोला कि auto neutral है तो है. न्यूट्रल के लिए हम दास यूज करते हैं, इसलिए दास. समझ में आया? तो ये हम बहुत डिटेल में, आज मुझे डिटेल में सिखाना नहीं है. वो हम 6 क्लासेस में इतना अच्छा सीखने वाले हैं. आपने अगर वो डेडिकेटेडली किया ना, तो 6 क्लासेस के बाद ट्रस्ट में आपके जो भी फ्रेंड्स है B1 वाले, उससे अच्छा आपका केसेस होंगे.
ट्रस्ट मी ऑन दैट. ठीक है, Okay. करोगे सब लोग? Yes. Yes. सेकेंड थिंग, एज आई सेड, प्लीज मेक श्योर कि आपके जो मैं ग्रुप पे जो मैसेज भेजूंगा, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं म्यूनिक में, उनको वो भेज देना. माई ओनली थिंग इज कि मुझे फिर से ये क्लासेस नहीं शुरू करने. आई डोंट वांट टू स्टार्ट दिस अगेन. आई ऑनेस्टली होप दीज आर माई लास्ट क्लासेस. ऐसा मैं होप लास्ट मतलब ऑलमोस्ट 1 साल से कर रहा हूँ. मैंने जब वीडियोस बनाया तो मुझे लगा कि दैट वाज माय लास्ट टाइम ऑफ टीचिंग जर्मन. फिर देन आई स्टार्टेड लर्न जर्मन इन हिंदी, लर्न जर्मन इन मराठी. I hopefully think that this Learn German in Munich is my last classes. I don't want to start the last new classes. So that's why I want to reach as many places, people as can. You understand, right, what I'm trying to say? Yes. Yes. Okay. So as I Yes. said, we are done with a complete in one direction. We have done everything. We have done all tenses. We have done requests. We have done questions. We have done number, alphabet, and all. Now we will go in another direction and we will learn the cases. What we are trying to do now is basically we are going to become correct. अभी हमारा skeleton बन गया है. Basically now we are in a position where we can say यह again अच्छा स्कूल या अच्छी स्कूल. What is correct? अच्छा स्कूल. अच्छी स्कूल. अच्छा. एक Not पे आओ. अच्छी, रुको. अच्छा. Okay. जाने दो. सॉरी, अच्छा स्कूल. ठीक है, मैंने गलत एग्जांपल लिया. मेरे को हिंदी लोगों को झगड़ाना नहीं है. अच्छा बच्चा. क्लियर? तो अभी हम उस लेवल पे हैं कि हम वह बच्चा है बोल सकते हैं, पर हमको पता नहीं कि वह अच्छा है बोलना है, अच्छी बोलना है, अच्छे बोलना है. समझ रहे हो ना? वी आर ट्राइंग टू जस्ट मेक श्योर कि वो अच्छा अच्छी कैसे होता है. आई एम जस्ट गिविंग एन एनालॉजी. इंग्लिश में उतना प्रॉब्लम नहीं है कि सब कुछ गुड ही होता है, राइट? गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड. समझ में आया? ओके, वेरी इजी. बट केसेस एंजॉय करेंगे हम एक साथ तो वेरी इजीली हो जाएगा. एवरीबॉडी क्लियर? Yes. Enjoyed today's class? Yes. Yeah. All tenses Yes. are clear? Yeah. Okay, then if there are no doubts, we will wait for 3 minutes. Exactly 7:55 we will stop. Let me check on YouTube. Okay, तब तक आप सोचो आपको कोई डाउट्स है क्या? Anybody, any doubts? So before the next classes, when you are starting with case, you need to by heart the there, thus, what you gave. Not at all. Not at all. Okay, good question. That there the das was not for now. That was just as a useful thing. What is that there the das and all we will learn in the next class. Don't worry. Okay. It was see, I told you that time also, right? In all classes up till now, I had given that 250 words after we have learned cases. I had given these you to earlier because some might not have gone on vacation and then they could have used this time to learn those words. That's it. Nothing else. Okay. Clear? You Yeah. don't need to remember that there the das right now. Yeah. For now, you can just remember the word. Anyone else? Yes. If not, then let's stop. As I said, Thursday, please be on time. Please make sure to attend it. We are going to really enjoy the cases. Okay? Okay. Okay. Thanks a lot, everyone. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye bye.